traveling abroad often offers an opportunity to interact with influencers of public opinion in India, many of whom tend to believe that India's attention has generally shifted away from Pakistan and towards its larger concerns viz. Indo-Pacific strategy, relations with China, and the goal of making India a $5 trillion economy. Pakistan, they say, is not on the radar of Indian public consciousness as it once was. Given its growing global and regional profile and economic weight, it appears that India's appetite for dialogue with Pakistan has reduced. The impression in Pakistan, on the other hand, is that the pursuit of Hindutva-driven objectives of the BJP government are shrinking space not just for Indian minorities, especially Muslims, but also for ties with Pakistan. Many do agree in principle, however, that a prolonged communication gap with Pakistan will not be cost-free for India, and that for the latter's long-term prosperity, there is a need to engage with its western neighbor. Ideally, India would not want its growing profile to be undermined by a turbulent neighborhood, and should, therefore, normalize ties with all its neighbors. Pakistan, too, would benefit from a peaceful neighborhood as that would give it space to put its economic house in order. In the evolving global geopolitics, South Asia must not become a ground for camp politics. Instead, India and Pakistan would be better off focusing on the region itself. By working on peace constituencies such as connectivity, trade and people-to-people contacts, the two countries would not only help overcome mutual mistrust but also make South Asia a bastion of peace and development. South Asia must not become a ground for camp politics. Meanwhile, the Pakistan-India relationship is completely at a standstill. The two countries are not engaging at any level. Even the recent peace initiatives that Pakistan took elicited little reciprocity from India. The Kartarpur Corridor, responsible conduct after the Indian strike on Balakot, the voluntary release of the captured Indian pilot as a peace gesture, and a restrained response to the landing of India's BrahMos missile in Pakistan. The only initiative where the Indian side was keen to engage with Pakistan was in the context of maintaining a ceasefire along the line of control. Some reports indicate back-channel contacts, but no tangible outcome has emerged. The two core issues dominating the discourse between India and Pakistan are the Kashmir dispute and terrorism. On fighting terrorism, much of India's concerns have already been addressed as Pakistan has achieved notable success in apprehending militants and terrorists. In fact, the shoe is now on the other foot, as Pakistan is discovering fingerprints from across the border on many of the recent terrorist incidents in this country. Nevertheless, this is one issue on which both countries should engage, as terrorism is a common enemy. On Jammu and Kashmir, the positions of both sides seem to have hardened. Pakistanis are convinced of the political, moral and legal righteousness of their stance that the people of J&K ought to be given their right to self-determination. Indians insist that J&K is an integral part of India. The situation on the ground is that the freedom movement continues, and India is obliged to keep a large number of security forces in the held valley. The events of August 2019 have complicated matters. Pakistan believes that making J&K Union territories was a breach of the relevant UN Security Council resolutions, which do not permit changing the status of the disputed territories. India, however, maintains that these were internal administrative measures and that Pakistan has also made administrative changes in the territories under its control. The larger concern for Pakistan is that efforts are afoot to change the demography of occupied Kashmir through new domicile rules and opening of voter lists to non-Kashmiri residents. Clearly, some out-of-the-box thinking is required to break the logjam and find a solution acceptable to both countries. One possibility that could have traction on both sides is to revisit the four-point formula that was successfully negotiated in 2007 but could not be agreed on formally. That formula envisaged self-governance for the two units comprising areas controlled by India and Pakistan, gradual demilitarization, joint mechanism on matters of interdependence, and review of the arrangements subsequently. The formula has potential for further negotiation and improvement. However, revisiting it can only be done when both countries engage in dialogue or take it up in the back channel.
This could happen after elections in Pakistan this year and India next year, provided the newly elected governments muster enough political will to move in that direction. The writer is a former foreign secretary and author of Diplomatic Footprints. Published in Dawn, February 5, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. बैरून मुल्क सफ़र अक्सर हिंदुस्तान में राय आमा के असर और रसूख रखने वालों के साथ बातचीत करने का मौका फराहम करता है, जिनमें से बहुत से लोगों का ख्याल है कि हिंदुस्तान की तवज्जो आमतौर पर पाकिस्तान से हट गई है और उसके बड़े खदशात जैसे इंडो पैसिफिक हिकमत अमली, चीन के साथ ताल्लुकात और हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के हदफ की तरफ मुंतकिल हो गई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान भारतीय अवाम के शौर के रेडार पर नहीं है जैसा कि वो पहले था। इसके बढ़ते हुए आलमी और इलाकाई प्रोफाइल और माशी वजन को देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए हिंदुस्तान की ख्वाहिश कम हो गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि बीजेपी हुकूमत के हिंदुत्व पर मबनी मकासद के हुसूल के लिए न सिर्फ भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों बल्कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए भी गुंजाइश कम होती जा रही है। ताहम बहुत से लोग उसूली तौर पर इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान के साथ तवील मवासलाती खला भारत के लिए महंगा नहीं होगा और पाकिस्तान की तवील मुद्दती खुशहाली के लिए अपने मगरबी हमसाया मुल्क के साथ बातचीत की ज़रूरत है। मिसाली तौर पर भारत नहीं चाहेगा कि इसके बढ़ते हुए प्रोफाइल को एक शोरिश ज़दा हमसाया मुल्क की वजह से नुकसान पहुंचे और इसलिए इसे अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहिए। पाकिस्तान को भी एक पुरम पड़ोस से फ़ायदा होगा क्योंकि इससे इसे अपने माशी घर को मुनज़्ज़म करने का मौका मिलेगा। बदलती हुई आलमी जोग्राफियाई सियासत में जनूबी एशिया को कैंप की सियासत का मैदान नहीं बनना चाहिए। इसके बजाय भारत और पाकिस्तान खित्ते पर ही तवज्जो मरकूज करेंगे। राबते, तिजारत और अवामी राबतों जैसे अमन के हलकों पर काम करके दोनों ममालिक न सिर्फ बाहमी अदम एतमाद पर काबू पाने में मदद देंगे बल्कि जनूबी एशिया को अमन और तरक्की का गढ़ भी बनाएंगे। जनूबी एशिया को कैंप की सियासत का मैदान नहीं बनना चाहिए। दरियासना, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर जमूद का शिकार हैं। दोनों ममालिक किसी भी सतह पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जानिब से हालिया अमन इक़दामात को भी भारत की जानिब से बहुत कम पजीराई मिली। करतारपुर राहदारी, बालाकोट पर भारतीय हमले के बाद जिम्मेदाराना तर्ज अमल, अमन के इक़दाम के तौर पर गिरफ्तार हिंदुस्तानी पायलट की रज़ाकाराना रिहाई और पाकिस्तान में भारत के बरामूस मिसाइल की लैंडिंग का मोहतात जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी को बरकरार रखने के तनाजुर में हिंदुस्तानी फरीक पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का वाहिद इक़दाम था। कुछ रिपोर्ट्स बैक चैनल राबतों की निशानदेही करती हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो बुनियादी मसाइल कश्मीर तनाज़ा और दहशतगर्दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत के ज़्यादातर खदशात पहले ही दूर हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अस्करियत पसंदों और दहशतगर्दों को पकड़ने में नुमायां कामयाबी हासिल की है। दरहकीकत ये जूता अब दूसरे पांव पर है क्योंकि पाकिस्तान इस मुल्क में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात पर सरहद पार से फिंगरप्रिंट्स तलाश कर रहा है। बहरहाल ये एक ऐसा मसला है जिस पर दोनों ममालिक को शामिल होना चाहिए क्योंकि दहशतगर्दी एक मुश्तरका दुश्मन है। जम्मू कश्मीर पर दोनों फरीकों का मौक़िफ़ सख्त होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी अपने इस मौक़िफ़ की सियासी, इखलाकी और कानूनी सदाकत के कायल हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक खुदरादियत दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तानियों का इसरार है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। ज़मीनी सूरत हाल ये है कि तहरीक आज़ादी जारी है और भारत मकबूजा वादी में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस रखने का पाबंद है। अगस्त 2019 के वाक़यात ने मामलात को पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान का मानना है कि जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुताल्लिका करारदादों की खिलाफ वर्जी है जो मुतनाज़ा इलाकों की हैसियत को तब्दील करने की इजाज़त नहीं देती है। ताहम भारत का मौक़िफ़ है कि ये दाखिली इंतज़ामी इक़दामात हैं और पाकिस्तान ने अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में इंतज़ामी तब्दीलियां भी की हैं।
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तशवीश ये है कि नए डोमिसाइल कवानीन के जरिए मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने और गैर कश्मीरी बाशिंदों के लिए वोटर लिस्टें खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। जाहिर है कि इस तातुल को ख़त्म करने और दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल हल तलाश करने के लिए कुछ हटकर सोचने की ज़रूरत है। एक इम्कान जो दोनों फरीकों की तवज्जो का मरकज़ बन सकता है वो ये है कि 4 निकाती फार्मूले पर नज़रसानी की जाए जिस पर 2007 में कामयाबी से बातचीत की गई थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। इस फार्मूले में भारत और पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर मुश्तमिल दोनों इकाइयों के लिए खुद हुक्मरानी, बतदरीज फौज कशी, बाहमी इन्हिसार के मामलात पर मुश्तरका मेकानिज़्म और बाद में इंतज़ामात का जायज़ा लेना शामिल था। इस फार्मूले में मज़ीद मुज़ाकरात और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ताहम इस पर नज़रसानी सिर्फ इसी सूरत में की जा सकती है जब दोनों ममालिक बातचीत में मशगूल हों, इसे बैक चैनल में उठाएं। ये इस साल पाकिस्तान और अगले साल भारत में इंतखाबात के बाद हो सकता है, बशर्ते कि नई मुंतखब हुकूमतें इस समत में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सियासी अज़्म जमा करें। मज़मून निगार साबिक़ सेक्रेटरी खारजा और डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स के मुसन्निफ हैं। अखज़ शुदा बतारीख़ 5 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.